Welcome to my channel CA Gayatri's Academy, and today we are going to discuss on the MCQs on IND AS 113 fair value measurement. Already we have covered the IND AS 113 in a very nice manner, lucid manner. You can go and check it there, and after that we are going to master our capacity or understanding on how to deal with the MCQs or the sums in a practical way. Let's start with the topic. So this after solving this MCQs, 100% you will be in the position where you can solve any of the questions which are going to come from this IND AS 113, right? So before starting off with the topic, we will do first a little short revision. Even if the students who have not done the IND AS 113, just a quick revision of what is going to cover. We are going to cover. Let's take the thing. IND AS 113, what does it says? Okay, fair value measurement definition. Fair value is a price to sell an asset or transfer liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. So this goes the definition. तो कोई भी एसेट को सेल करने का जो प्राइस है या कोई भी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होना है एंड बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स होना है एट द मेजरमेंट डेट. Then we have the exit price. What is the exit price? Based on market participant perspective. Market participant के बेस में जो आएगा वही होगा market price and exit price, and that will not be entity specific. That will be based on market participants. Okay. Market basis, principal market और most advantages if no principal market. अगर कोई particular item के लिए एक principal market है तो हम उससे जाएंगे, अगर नहीं है, और most advantages if principal market does not exist. Highest and best use. Okay, for non-financial assets, जो assets financial नहीं है, must be physically possible, legally permissible and financially feasible. मतलब जो asset non-financial है उस asset का फिजिकली पॉसिबल उसको होना है, लीगली परमिसेबल, वो परमिसेबल भी है लीगली खरीदना, एंड फाइनेंशियली फीजिबल ऑल्सो. सो दैट इज हाइएस्ट एंड द बेस्ट यूज, राइट. Then fair value hierarchy. What are the hierarchy? There are 3 levels. Okay, level 1, level 2, level 3. So we have to go by the 3 inputs. जो input हमें मिलेंगे, quoted price in active markets for identical items, exactly same items जो stock market में quoted है, right? Active market है उसका, वहाँ से तो फिर हम level 1 में जाएंगे. अगर उसका price level 1 में है तो that means any item or any asset liability which is identical to the items which is quoted in the active market. So level 1. Then comes level 2, observable inputs other than level 1, जो लेवल 1 में नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, बट सिमिलर एसेट्स बाय इंटरेस्ट रेट्स, जो ऑब्जर्वेबल इनपुट्स उसका है, हम उसको देख सकते हैं, दैट कैन बी ऑब्जर्वेबल. सो दैट विल कम अंडर लेवल 2. ओके, एंड लेवल 3, दोज इनपुट्स हु आर unobservable, significant unobservable inputs, example deceive assumptions, right? So ये 3 लेवल हो गए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. Key applications. Liabilities includes non-performance risk, own credit risk. Liabilities के इसमें एक क्षेत्र में क्या होगा, whenever liabilities comes, non-performance risk को हमें include करना है, own credit risk को include करना है, ठीक है, for while calculation. No blockage discounts for level 1 quoted prices. जो level 1 में है quoted prices है, जिसका identical items in the active market है, उसके लिए no blockage discounts will be allowed. And valuation techniques. 3 है, market approach, income, that is deceive approach, and the third is the cost approach, right? So disclosures for level 3. level 3 के लिए disclosures बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट, बट level 3 के लिए क्या क्या करना है देखते हैं. क्वांटिटेटिव इनपुट्स, व्हाट आर द इनपुट्स, क्वांटिटेटिव इनपुट्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस करने हैं, रिकंसिलेशन मूवमेंट्स मतलब 2 से 3 में आया, 1 से 3 में आया, या 3 से 2 में गया, वाई इसको रिकंसाइल करना है, वैल्यूएशन प्रोसेस, नैरेटिव. तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स विच हैव टू बी टेकन फॉरवर्ड फॉर सॉल्विंग दोज MCQs. हम MCQs कैसे करेंगे? वी विल फर्स्ट सी द क्वेश्चंस. ओके, यू ट्राई योरसेल्फ एंड एन आंसर विल बी शोन टू यू सो दैट you can understand your level of understanding this in AS 113, right? And this is from examination point of view, it is very important, right, for the final students. Okay, let's start off with the topic.
Focus area for revision, principal versus most advantageous market. If principal market is there, we will go by that. If principal market is not present, then we will go by the most advantageous market, right? Know the hierarchy and the definitions, okay? Non-performance risk, crucial for liability measurement, okay? Then highest and best use, two premises, if in use और in exchange. अगर in use है तो we will go highest and best use. कोई two premises हमारे पास मिलता है. In use में अगर है कोई भी item तो we will go by the, if a particular asset है A and that asset has to be used with compatible or you can say in along with the other assets, ठीक है, और भी दूसरे assets के साथ में उसे हमें use करना है, then will in use. and in exchange अगर होगा तो फिर sole use हो सकता है, right? Prohibitions, no blockage factor adjustments for level 1, okay? Discloses level 3 requires quantitative sensitivity analysis and reconciliation. So we can say after solving these MCQs, okay, a student can assess, test the understanding required at final level, okay? Focus on the conceptual framework. क्या definition से सबके अच्छे से जाइए, जो मैंने coverage किया उसको देखिए. Premise, market participants क्या है, the hierarchy, especially level 2 and level 3 distinction कैसे हमें पता चलेगा, and specific applications, liabilities का कैसे application होना चाहिए, non financial assets का क्या application होना चाहिए, large holdings का क्या applications होना चाहिए, ठीक है. तो level 2 and level 3 में distinctions main है कि जहाँ पे observable inputs दिखे जा रहे हैं वो level 2 में जाएंगे, जो जहाँ पे inputs unobservable है, significant inputs, so that will go under level 3. So like this we have the focus on revision area. Let's start with the revision part. Question number 1, okay. तो जैसे जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे, you see what the answer will be, then the answer will be seen to you, okay, shown to you. Which of the following is correct? Definition of fair value as per Ind AS 113. The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market conditions. B. The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in a forced transaction between knowledgeable willing parties at the measurement date. C. The price that would be received to sell an asset or paid or transfer liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date without considering non-performance risk. Okay, and D. The exit price from the perspective of the reporting entity in the principal market, irrespective of whether the market is accessible on the measurable date. The answer will be A, that is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market conditions. तो अभी यहाँ पे आंसर ए का 3 ये है, इंडिया से डेफिनेशन में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑर्डरली ट्रांजेक्शंस होने हैं, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स होना है एंड एट द एग्जिट प्राइस होना है, ठीक है. सो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 2. एंटिटी ए होल्ड्स 20% इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एन अनलिस्टेड कंपनी. कंपनी क्या है? अनलिस्टेड, राइट, which it has accounted at FVTPL. That is FVTPL का full form है fair value through profit or loss. Okay, fair value through profit or loss. The most appropriate valuation technique to measure its fair value would be, इसका measurement के लिए कौन सा most valuable होगा? Level 1 input, quoted price of an identical asset in an active market. Level 2 input, quoted price of a similar asset in an active market adjusted for obsolescence. Level 3 input, a discounted cash flow DCF model using entity specific cash flow projections and a risk adjusted discount rate derived from market data. And third, D is the net asset value of the investee company based on its latest audited balance sheet. Okay, तो अभी ये चारों में से कौन सा इसका आंसर होना चाहिए? Just check yourself. The answer will be C, that is level 3 input. Why? For unlisted equity instruments, it is an equity instrument first of all, right? Unlisted, remember this, unlisted equity instrument, a DCF model is always used, that is discounted cash flow model will be used for level 3 input, is often the only viable technique, right? Remember, if it is an equity instruments and it is unlisted, then a DCF model is only viable technique. Entity specific projections must be adjusted to a market participant perspective and the discount rate may be derived from the market data. Okay, that is all okay, but DCF is a must for unlisted equity instrument. Question number 3. When measuring the fair value for liability, okay, fair value for liability, remember this liability we are saying for this, which of the following is a valuation premise that must be considered?
First A, the fair value reflects the amount that the entity would receive if it were to issue the identical liability at the measurable date, right? Second, the fair value reflects the amount that the entity would pay to transfer the liability to a market participant who would then be required to fulfill it. B. C. The fair value of a liability should always be measured based on the exit price from the perspective of the entity that owes the liability. Third and fourth, the fair value of a liability incorporates the entity's own credit risk and any change in that credit risk is recognized in other comprehensive income, that is OCI. तो इसका क्या है, लाइबिलिटी के फेयर वैल्यू हम जब निकालेंगे हमें वैल्यूएशन प्रेमिस कैसे कंसिडर करना पड़ेगा, द आंसर विल बी बी. ओके, ऑलवेज रिमेंबर द आंसर विल बी बी. द फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट दैट द एंटिटी वुड पे टू ट्रांसफर द लाइबिलिटी टू अ market participant, okay, who is ready to pay it, who would be then required to fulfill it. Okay, the fair value of liability is based on transfer notion, not on settlement notion. उसको settle नहीं करना है, उसको transfer का notion में हमें देखना है, ठीक है. It assumes the liability is transferred to another party who must perform on it. ओके, कोई भी चीज़ को सेटलमेंट का बात यहाँ पे नहीं आएगा. लाइबिलिटी जब होगा इट शुड बी ऑन द ट्रांसफर नोशन, राइट. एंड नंबर बी, B is correct and number A would have been correct अगर वहाँ पे transfer word use होते instead of issue. See, so incorrect as it talks about issue not transfer. ना नहीं तो number A, B यहाँ पे correct हो सकता था if it would have spoken of transfer. See, the fair value reflects the amount that the entity would have received if it were to issue the identical liability at the measurement date. Instead of issue अगर यहाँ पे use करते transfer, then it would have also been the true answer. तो यहाँ पे answer is C, number B, which is based on transfer the liability to the market participant who is going to required to fulfill it. Okay, question number 4. Entity B has a large block of shares, okay, in a listed company. तो यहाँ पे क्या हो गया, listed company large block of shares है, more than 50% holding है, subsidiary company more than 50% holding. The shares are frequently traded in active market. So here comes the words active market है उसका, level 1 में आ गया. For the purpose of consolidated financial statements, the fair value of this investment should be, let's see, the quoted price level 1 multiplied by the number of shares held without any blockage factor discount. Number B, the quoted price level 1 multiplied by the number of shares held but a blockage factor discount must be applied because it is a controlling stake. Okay. C, the price of the recent observable transaction for the same block of shares level 2 as a controlling stake cannot be valued using level 1 inputs. And D, the valued using a level 3 DCF model as a unit of account is the investment is in subsidiary, not the individual shares. The answers for this question will be A, because Ind AS 113 is clear that a quoted price in an active market level 1, okay, it is first of all it is quoted in an active market, तो market है तो उसको obviously level 1 में घुस गया, is not adjusted for factors specific to holding size like a blockage factor. Blockage factor का consideration हम level 1 में नहीं करते हैं. The unit of account is the individual financial instrument. तो unit of account क्या होता है, individual financial instrument is it's a the account. Okay, so यहाँ पे number A इसका आंसर है without any blockage factor discount. तो Ind AS 113 completely clear है इस बात पे. अगर active market है you have to be in level 1 and there is no need to do any adjustment of specific factors, that is like blockage factors. Question number 5. In the fair value hierarchy of Ind AS 113, an adjusted quoted price, okay, for an identical asset in an inactive market would be classified as, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ऑलवेज देखेंगे क्या बोला, एन एडजस्टेड कोटेड प्राइस है कोटेड बट इज एडजस्टेड फॉर एन आइडेंटिकल एसेट, ठीक है, इन एन इनएक्टिव मार्केट इज नॉट एक्टिव, इनएक्टिव मार्केट वुड बी क्लासिफाइड एज लेवल 1 एज इट इज स्टिल अ कोटेड प्राइस. Second, level 2 because the adjustment is based on observable market data, identical asset, ठीक है, in an inactive market. Inactive market में है identical asset, okay, it is not an active market. Level 2 because the adjustment is based on observable market data. Level 2 because only if the adjustment is significant, otherwise in level 1. And level 3 because an inactive market necessitates the use of significant unobservable inputs.
level 3 because an inactive market necessitates the use of significant unobservable inputs. तो इसका आंसर ऑब्वियसली बी होगा, क्योंकि इफ द एडजस्टमेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मार्केट डाटा, दैट इज ब्रोकर्स कोट्स, रिसेंट ट्रांजेक्शंस, इफ इट फॉल्स अंडर लेवल 2, राइट, बिकॉज लेवल 2 में क्यों पड़ेगा, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट ऑब्जर्वेबल मार्केट डाटा है आइडेंटिकल आइटम्स बट इन द इनएक्टिव मार्केट, सो इट विल कम अंडर level 2. okay, it falls under level 2. It becomes level 3 only if the adjustment requires significant unobservable inputs. अगर इसके बाद दिया तो यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाता है जहाँ पे सिग्निफिकेंट अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स है, तब हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं इन लेवल 3. Question number 6. Entity C measures the fair value of its defined benefit plan liabilities. So defined benefit plan liabilities हमें फर्स्ट देखना है किसके बारे में बात कर रहा है. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं defined benefit plan liabilities के बारे annually. The present value of the defined benefit obligation is calculated using a discount rate based on, किस पे बेस करके किया जाएगा. ओके, the weighted average cost of capital WACC of the entity first. Second, the interest rate on high quality corporate bonds with currency and term matching the benefits. Okay, currency और जो term match करे उसके basis में करेंगे. C, the risk free government bond rate. Okay, and D, this is not a fair value measurement, it is a present value of future obligations under Ind AS 19. So the answer will be D, which says this is a classic trick to check whether you are confused or not. Defined benefit obligations comes under Ind AS 19 are measured using actual present value techniques, okay, which are not the same as a fair value measurement under Ind AS 113. okay, so discount rate is as per B, but the framework is different. B के हिसाब से होना चाहिए rate on high quality corporate bonds with currency and terms matching the benefit होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये Ind AS 19 के अंडर कवरेज है, हम इसको और इसका कैलकुलेशन होगा एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक से, तो हम Ind AS 113 के नीचे फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स का नहीं करेंगे, राइट. सो आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 7. रिगार्डिंग द फेयर वैल्यू ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल एसेट. तो हम जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे फर्स्ट में देख लें किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है. Whether it is a financial asset, whether it is non-financial asset, whether it is a biological asset, whatever asset it is, we have to see to it first, or whether it is a liability or not, and किसी और AS in AS के अंदर उसका कोई treatment है कि नहीं, तो we have to give the treatment likewise. Okay. Regarding the question number 7, regarding the fair value of a non-financial asset like machinery or a brand, the highest and best used valuation premise. हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ में हम जब भी ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऑलवेज याद रखना पड़ेगा हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, इट शुड बी फिजिकली पॉसिबल, लीगली परमिसिबल एंड फाइनेंशियली फीजिबल. ये तीनों लाइन को ऑलवेज रिमेंबर विद द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज में, ठीक है. लेट्स सी द ऑप्शंस व्हाट दे आर गिवन. रिगार्डिंग द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, highest value premise is determined from the perspective of reporting entities current use. रिपोर्टिंग एंटिटीज को कैसे यूज कर रहा है, मस्ट बी फिजिकली पॉसिबल, लीगली परमिसेबल एंड फाइनेंशियली फीजिबल. सी इज ओनली एप्लीकेबल इफ द एसेट इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड इमीडिएटली, and D is irrelevant if the asset is part of a large asset group for which there is no market. 100% the answer will be B. Okay, this is a core definition of highest and best use. It is a market based concept, not entity specific. कोई भी एंटिटी के हिसाब से नहीं है, मार्केट बेस्ड कॉन्सेप्ट. ओके, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर बेस करके होगा. इट अप्लाइज इवन इफ द एंटिटी डज नॉट इंटेंड टू यूज द एसेट दैट वे, किसी भी वे से हो, बट इट शुड बी physically possible, legally permissible and financially feasible. Question number 8. Which of the following is a mandatory disclosure for assets oblique liabilities measured at fair value using level 3 inputs? Level 3 inputs के हिसाब से इसको measure किया गया है. इसका fair value कोई भी asset या liability हो तो क्या mandatory disclosure है? A option, the quantitative disclosure about unobservable inputs used, the name of the independent valuer appointed, the detailed reconciliation is required only if the changes in fair value exceeds 10% of the total assets, and D, the fact that the entity has changed its valuation technique during the period but not the reason for change. Okay, for this answer question number 8, क्या इसका mandatory disclosure रहेगा? That will be obviously A. Okay, the quantitative disclosures
about the significant unobservable inputs used in level 3 fair value measurement. A reconciliation of movements is also mandatory. Reconciliation of movements जो है level 1 से 2 से 1 ऐसे या 2 से 3 क्यों है उसको भी mandatory reconciliation करना है. साथ में quantitative disclosures about the significant unobservable inputs is a must under the definition of Ind AS 113. Question number 9. Entity D acquires a financial liability, a debenture. एक debenture खरीद रहा है, financial liability है, has an identical quoted price in an active market, right? Market. Later, entity D's own creditworthiness, उसका अपना creditworthiness deteriorates significantly. Okay. The effect of this change in credit risk on the fair value of the liability should be, ठीक है. अभी क्या बोला जा रहा है, रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस, रिकॉग्नाइज इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ignored as a liability is measured at amortized cost. It depends on whether the liability is designated at FVTPL or not. If at FVTPL the change including own creditors is recognized in profit and loss. तो क्या बोल रहे हैं, एंटिटी डी एक्वायर्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, डिबेंचर खरीद रहा है जिसका अपना आइडेंटिकल कोटेड प्राइस एक्टिव मार्केट में है. ओके, तो इट कम्स अंडर लेवल 1. The effect of this change in credit risk on the fair value of the liability should be, जो credit risk में change हुआ उसका क्या इफेक्ट होना चाहिए. ठीक है, अब हम देखते हैं. उसको हम रिकॉग्नाइज प्रॉफिट लॉस में करना है, OCI में करना है, अमोर्टाइज कॉस्ट में नो. द आंसर विल बी कंप्लीटली डी, दैट इट डिपेंड्स ऑन वेदर ओके द लाइबिलिटी इज डेजिग्नेटेड FVTPL मतलब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और नॉट. इफ एट FVTPL में है द चेंज इंक्लूडिंग ओन क्रेडिटर्स रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमें देना है. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, फॉर लाइबिलिटी जनरेटेड फेयर वैल्यू थ्रू TPL द चेंजेस इन फेयर वैल्यू ड्यू टू चेंज इन द एंटिटीज ओन क्रेडिट रिस्क are present separately in OCI, the remainder in profit and loss. If not designated, it's likely at amortized cost where fair value is not relevant. So the answer will be D. Question number 10. When measuring the fair value of an asset using a present value technique, discounted cash flow, that is DCF method use कर रहे हैं. Which of the following describes a fair value measurement? Fair value measurement किसको बोला जा रहा है? Uses risk adjusted cash flows and a risk free discount rate. Uses certainty equivalent cash flows and a risk-free discount rate. Uses probability weighted cash flows and a discount rate that reflects risk not reflected in cash flows. Uses management's best estimate of most likely cash flows and the entity's incremental borrowing rate. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, measuring the fair value of an asset using a present value technique. प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक यूज कर रहा है, डिस्काउंट कैश फ्लो, तो विच डिस्क्राइब्स अ फेयर वैल्यू मेजरमेंट. फेयर वैल्यू मेजरमेंट हम जब भी कर रहे हैं फेयर वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निकली हम ऑब्वियसली गो बाय द probability weighted, so that is the C portion, right? This is the prescribed method under the standards application guide. Either adjust for risk in the cash flows, expected cash flows, and use a risk free rate, or use unadjusted cash flows and a risk adjusted discount rate. Describes the later more common approach. Okay, this C describes the later more common approach, so we obviously go by the C. Question number 11. In measuring the fair value of an asset or liability, which of the following is considered a market participant characteristic? In measuring the fair value of an asset or liability, fair value asset का या liability का है, which of the following is considered a market participant characteristic? Market participant का क्या characteristic है? The specific intentions of the reporting entity regarding the use of the asset, the ability to use the asset in a way that is legally permissible, physically possible, and financially feasible. Okay, the market participants access to the same source of financing as the reporting entity, and the market participants specific synergies with the asset that are not available to the other market participants. Okay, तो हम जब measure करें fair value कोई भी asset liability का, which of the following is considered market participant? तो obviously and 100% this will be B. इधर कोई सोचना ही नहीं है. The answer is B. Market participants are assumed to have the ability to use the asset in its highest and best use, which is legally permissible, physically possible, and financially feasible. They do not have to access to reporting entities, specific synergies, or financing methods. Question number 12. Entity E is measuring the fair value of custom built machine that is highly specialized. First of it is custom built machine, then it is highly specialized. Okay, there is no active market for the machine. Active market नहीं है तो level 1 तो ही कट गया. The entity has determined that the machine's highest and best use is in its combination with other assets.
कॉम्बिनेशन एसेट्स. ओके, विच वैल्यू टेक्निक इज मोस्ट एप्रोप्रिएट. कॉम्बिनेशन विद अदर एसेट्स उसको हमें यूज करना है, ठीक है, एंड विच वैल्यूएशन टेक्निक हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट है, इन यूज में है. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एडजस्टेड फॉर ऑब्सोलेसेंस. नंबर बी, द इनकम अप्रोच यूजिंग अ डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल फॉर द एसेट ग्रुप इन विच द मशीन इज यूज्ड. C, the market approach using quoted price for similar machines in active markets. And D, the residual value approach by deducting the fair value of all the other assets in the group from the fair value of the group. The answer will be, हमने जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन देखा जो कस्टम बिल्ड है, हाईली बिल्ड एंड देयर इज नो एक्टिव मार्केट एंटिटी, बेस्ट यूज इन कॉम्बिनेशन, तो ऑब्वियसली हमें जिस एसेट ग्रुप में उसे यूज करना उसी के बेसिस में लेंगे. तो आंसर विल बी बी. When the highest and best use is in combination with other assets, the fair value is measured based on the contribution of the asset to the cash flows of the group. The income approach that is received for the group is often used. So B is the answer. The income approach using a discounted cash flow model for the asset group in which the machine is used. Question number 13. According to Ind AS 113, which of the following is true regarding transaction cost? Always remember transaction cost कहाँ लेना है. Okay. Transaction costs are considered in determining the fair value of an asset or liability. Transaction costs are deducted from the fair value if it is asset is to be sold. Transaction costs are not part of fair value measurement. They may be accounted for as an expense when incurred. And D, transaction costs are added to the fair value if the liability is to be transferred. किसी भी केस में फेयर वैल्यू मेजरमेंट के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगा. ओके, रिमेंबर दैट ऑलवेज, वी डोंट कंसिडर इट. सो द आंसर विल बी सी. Transaction costs are not part of fair value. They are considered separate and may be expensed or capitalized as per the standards. Question number 14. Entity F holds a derivative. Derivative है that is traded in active market. Remember traded in active market. Market उसका है. So level 1 में आगे गया. However, on the measurement date, the market is closed due to holiday. It is closed due to holiday. The fair value of the derivative should be based on किसके basis में लिया जाएगा. The last quoted price before the holiday, provided there has been no significant change in circumstances of the date. A. B. The first quoted price after the holiday, adjusted for any known changes during the holiday. Okay. C. A level 3 valuation technique because the market was closed on the measurement date. And D, the average of the last quoted price before the holiday and the first quoted price after the holiday. Okay, the answer will be here the price which was there in the last day. Okay, and provided no significant change, so that will be the A answer. If the market is closed, the fair value is determined using the last quoted price, provided there is no significant change in the circumstances. Adjustments are made if there is evidence that the last price is not representative. अब ये अगर बोला जाता है कि लास्ट डे जो हुआ तो उसके लिए अभी तक जो हॉलीडे के बाद भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, then adjustments have to be made. Question number 15. Entity G requires a financial asset that is not traded in active market. The asset has contractual cash flows, okay, that are not solely payments of principal and interest. Principal interest of payment नहीं है, contractual cash flows है. Entity G must measure this asset at amortized cost, fair value through profit or loss, fair value through other comprehensive income, the lower of the cost to net realizable value. दो इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट है, मार्केट भी उसका एक्टिव मार्केट में ट्रेडिंग नहीं है, तो एसेट का कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज जो है वो भी सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी नहीं है, राइट. तो इसका आंसर ऑब्वियसली विल गो बाय एफवीपीटीएल. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस. व्हाट डज इट सेज अंडर इंड AS 109. ये फाइनेंशियल एसेट है. 109 deals with financial asset. A financial asset that does not meet the criteria for amortized cost or FVOCI, मतलब fair value through OCI में भी नहीं होगा, must be measured at FVPTL. Contractual cash flows that are not solely payments to principal and interest fail the business model test for amortized cost and FVOCI. So ये इन AS 109 के अंदर जाता है, तो यहाँ पे इसका कोई डीलिंग नहीं, तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में होगा. Which of the following is required disclosure for fair value measurements categorized within 3 of the fair value hierarchy? The reasons for any transfers between level 1 and level 2, a narrative description of the valuation process used by the entity, क्या entity use कर रहा है, ठीक है, and the amount of unrealized gains and losses for the period.
unrealized gains and losses for the period included in profit and loss that are attributable to level 3 assets and liability. Level 3 assets and liabilities के लिए attributable है जो भी unrealized profits and gains and all of the above. तो we see all the three reasons are a must disclosure. So the answer will be number D. Okay. All the options are required disclosure for level 3 measurement, specifically A, B are required by Ind AS 113 and C is required for unrealized gains and loss related to the assets which are in the liabilities and which are level 2. Level 3. Okay. Question number 17. Entity H measures a fair value of a liability using a present value technique. तो यहाँ पर present value technique use हो रहा है और fair value किसका निकाल रहा है? Liability का. The liability has a remaining term of 5 years. Okay. The discount rate used should be the risk-free rate for 5 years government bonds, the rate that would be used by market participants to discount the future cash flows of the liability, consider the time value of money and the risk specific to the liability. Okay. The entity's incremental borrowing rate for a 5-year loan and the weighted average cost of capital of the entity. So we go by 5 years ka term baki, we go by the rate that the used by the market participants, that is B. Okay. The discount rate should reflect the time value of money and the risk specific to the liability from the perspective of the market participants. Question number 18. Entity I holds an investment property that is measured at fair value under Ind AS 40. Investment property को हम deal करते हैं Ind AS 40 में, ठीक है? The property is in a city where there is an active market for the similar properties. Okay. However, the entity has recently received an offer to purchase the property at a price significantly higher than the prevailing market price. Prevailing market price से ज़्यादा उसको offer मिला है खरीदने के लिए, ठीक है? पर उसके active market similar जगह में है. The fair value of the property should be, क्या fair value हमें लेना चाहिए? उसका active market है similar properties में. ओके. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इंड AS 40 में डील होता है. साथ में बोला जा रहा है कि उसको खरीदने के लिए बहुत हाई इनकम एक प्राइस ऑफर किया गया है. तो आंसर अब क्या होना चाहिए इसका? द ऑफर प्राइस बिकॉज इट इज़ मोस्ट रिसेंट मार्केट ट्रांजैक्शन. Second, the prevailing market price for similar properties because the offer is not from a market participant. C, the average of the offer price and the prevailing market price. And D, the offer price only if it is from a market participant and the transaction is an orderly transaction. So this answer will be 100% D because the offer is from a market participant and the transaction is an orderly transaction. ठीक है? The fair value is the price of an orderly transaction between market participants, and offer price may be considered if it is from a market participant and the transaction is orderly. Otherwise, the prevailing market price is used. तो नहीं तो अगर ये this offer was not from a market participant, in that case the offer price would have been the most recent market transactions, right? Question number 90. Entity J uses a valuation technique that incorporates inputs from multiple levels of fair value hierarchy. The entire fair value measurement should be categorized in the level of the lowest level input that is significant to the entire measurement, in the level of highest level input as level 3 because multiple inputs are used, in the level corresponding to the weighted average of the levels of the inputs. So answer will be A because the fair value hierarchy is based on the lowest level of input that is significant to the entire measurement. Lowest level हमें लेना है, lowest level input लेना है because that is significant to the entire measurement. Question number 20. Entity K has a liability that is issued with an inseparable third party credit enhancement. Okay. It's a liability and which is issued with an inseparable third party credit enhancement. Okay. So remember these are 3 points. Now कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको ब्रेक कर लीजिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट इट इज एन लाइबिलिटी, इट इज इशूड, इट इज इंसेपरेबल थर्ड पार्टी एनहेंसमेंट. 3 पार्ट्स. हाउ शुड एंटिटी के मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ अ लाइबिलिटी? तो फेयर वैल्यू लाइबिलिटी को कैसे मेजर करें? द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी विदाउट द क्रेडिट एनहेंसमेंट, द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ द क्रेडिट एनहेंसमेंट, द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी ignoring the credit enhancement because it is provided by a third party, and the fair value of the credit enhancement separately from the liability. तो इसका हमें डीलिंग क्या करना है? We have to deal it in the form of B, that is the fair value of the liability including the effect of the credit enhancement. क्योंकि credit enhancement को देना है. Okay. Let's see what is saying explanation. The fair value of the liability considers the effect of the credit enhancements even if provided by a third party because market participants would take into account in pricing the liability. मार्केट में उसको लेंगे, थर्ड पार्टी का भी होने से भी थर्ड पार्टी क्रेडिट एनहेंसमेंट्स को लेने हैं क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसको लेंगे लाइबिलिटी को कंसिडर करने के टाइम. क्वेश्चन नंबर 21. एंटिटी एक्स होल्ड्स अ फाइनेंशियल एसेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. ओके.
दैट इज ट्रेड इन मल्टीपल एक्टिव मार्केट्स विद डिफरेंट प्राइजेस. उसका डिफरेंट प्राइस है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड है मल्टीपल एक्टिव मार्केट है और फाइनेंशियल एसेट है. ओके. As per Ind AS 113, the principal market for measurement is, principal market for measurement क्या होगा? The market with the greatest volume and the level of activity for the asset. B, the market in which the entity normally enters into transactions for the asset. C, the market that is most advantageous to the entity, highest price of an asset. And D, the market that is most accessible to the entity geographically. Okay. Financial asset hold कर रहा है, मल्टीपल एक्टिव मार्केट्स में है, डिफरेंट प्राइजेस में. तो इसका प्रिंसिपल मार्केट कौन सा होना चाहिए? इट शुड बी नॉर्मली एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन, दैट इज बी. ओके. द प्रिंसिपल मार्केट टू द मार्केट विद द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड द लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द एंटिटी, द मार्केट इन विच द एंटिटी नॉर्मली ट्रांजैक्ट्स. इफ देर इज नो प्रिंसिपल मार्केट, अगर प्रिंसिपल मार्केट है तो प्रिंसिपल मार्केट के सिवा हम कहीं नहीं जाएंगे, राइट? अगर प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तब हम जाएंगे द मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट इज यूज्ड. ओके. Remember this point when you are looking for a market. Question number 22. Then determining the fair value of a biological asset. Okay, a living animal. Which of the following valuation approaches would be most appropriate? ठीक है, biological asset है. Yeah, always remember this is a biological asset and living animal. कौन सा approach लेना चाहिए? Cost approach, historical cost of rearing. B, market approach using quoted price for similar animals adjusted for age health. C, income approach using discounted future milk meat production. Either B or C depending on availability of data as per Ind AS 41, Ind AS 113. The answer will be D, either B or C. ठीक है, जो डाटा हमें मिला है. क्यों? उसका रीजन है Ind AS 41 requires biological assets to be measured at fair value less cost to sell. उसको सेल करने में जितना खर्चा लगता है उसको लेस करना है. ठीक है. Ind AS 113 provides the framework. The approach depends on reliable data availability, either market prices of similar assets or present value of expected net cash flows. Market उसका प्राइस चाहिए either और similar उसका market है जिसमें उसको present value of the expected net cash flows. So it will be either B or C depending on the availability of data. Okay. Question number 23. Entity Y has a liability अराइजिंग फ्रॉम अ लॉ सूट. लॉ सूट से लाइबिलिटी है. ओके. तो लाइबिलिटी अराइज कर रहा है एक लॉ सूट से जो चल रहा है. अ थर्ड पार्टी हैज ऑफर्ड टू एज्यूम द लाइबिलिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹50 lakhs. अब थर्ड पार्टी बोल रहे हो हम वो लाइबिलिटी को ले रहे 50 लाख में. द एंटिटीज लीगल एडवाइजर एस्टिमेट्स एंड 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द केस विद एन एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ ₹80 lakhs. ठीक है. अब जो लीगल एडवाइजर है फॉर द केस में जो है डील कर रहे हैं इसको लॉसूट को, वो बोल रहे हैं 60% प्रोबेबिलिटी लूज कर जाएंगे और वहाँ से एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो है 80 लाख का. द फेयर वैल्यू ऐसा कैसे हम निकालेंगे उस लाइबिलिटी का? लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ केस इट्स अ लाइबिलिटी फ्रॉम लॉ सूट. इसका ऑफर टू एज्यूम लाइबिलिटी पेमेंट, कोई थर्ड पार्टी है जो उसको लेना चाहता है लाइबिलिटी को 50 लाख में, और एंटिटी का जो लीगल एडवाइजर वो एस्टिमेट कर रहे हैं 60% है जो वो लूज करेगा ही करेगा. 100% है, 100% केस नहीं, उसका 100 से 60% केस है कि इट विल लूज, 40% चांस दैट इट विल विन. ओके. एंड द केस से पैसा जाएगा कितना? 80 लाख का लूज करेगा. तो फेयर वैल्यू कैसे मेजर करेंगे? ₹80 lakhs एक्सपेक्टेड आउटफ्लो, ₹50 lakhs द ट्रांसफर प्राइस ऑफर्ड, एंड सी ₹48 lakhs, 80 lakhs आउटफ्लो होगा उसका 60%. ठीक है. एंड द अमाउंट दैट अ मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिक्वायर टू एज्यूम द लाइबिलिटी विच मे डिफर फ्रॉम बोथ ए एंड बी. ए बोल रहा है 80 लाख, बी से डिफरेंट है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? किस वैल्यू में हम इसको लेंगे? आंसर विल बी डी. द अमाउंट दैट अ मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिक्वायर टू एज्यूम द लाइबिलिटी. एक मार्केट पार्टिसिपेंट अगर प्रेजेंट रहेगा वो उस लाइबिलिटी को किस फॉर्म में लेगा? दैट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ द प्राइस विच मे डिफर फ्रॉम बोथ ए एंड बी. ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा. बी जो थर्ड पार्टी है, ए जो है वो बोला जा रहा है 80 lakhs उसका आउटफ्लो होगा. ठीक है, वो भी नहीं होगा. सो कोई भी पार्टिसिपेंट अगर है, मार्केट पार्टिसिपेंट है, हु विल एक्वायर द लाइबिलिटी, उसी के बेसिस में लिया जाएगा. राइट. Transfer offer might indicate fair value but must be assessed if it represents an orderly transaction between market participants होगा. Okay, an orderly transaction होगा. The legal estimate is an entity specific measurement. For a non-financial asset in use, valuation premise under highest and best use assumes
The asset would be used on a standalone basis. The asset would be used in combination with other assets or group. The asset would be sold immediately in its current condition. D, either B or C, depending on management's intention. So the answer for this will be, जब इन यूज का बात आता है फॉर हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज वी ऑलवेज गो फॉर कॉम्बिनेशन विद अदर एसेट्स. ओके, द आंसर इज बी. The in-use premise assumes that assets provides maximum value through use in combination with other assets. और जब in exchange रहेगा for highest and best use, then we go for standalone basis. Okay, तब standalone basis में उसको use करेंगे. but जब in use रहेगा we always go for in combination with other assets. Question number 25. Entity Z measures an entity equity instrument. It's again an equity instrument and at fair value through OCI. Okay, other comprehensive income. The instrument has no quoted market price, तो level 1 नहीं है. The entity Z uses a valuation model with significant unobservable inputs. Significant unobservable inputs directly through this thing into the instrument into the level 3. Okay, at the end of the year 2, some of those unobservable inputs become observable due to a new transaction in the market. New transaction in market में हुआ है तो observable आ गया है. This change should be accounted for as, इसको क्या लिया जाएगा. ठीक है, पहले वो था level 3. पहले first of all it's a fair value. कैसे निकालेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, वैल्यू थ्रू OCI में है. इंस्ट्रूमेंट कोई कोटेड नहीं है तो वो मार्केट 1 से लेवल 1 से निकल गया. लेवल 2 एंड लेवल 3 खुला है. अब लेवल 3 में जब जाता है वैल्यूएशन मॉडल विद सिग्निफिकेंट अनऑब्जर्व्ड इनपुट्स, इट्स गोइंग टू इनटू लेवल 3. ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द 2 years क्या हुआ, कुछ अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स बिकम ऑब्जर्वेबल, वो ऑब्जर्वेबल हो गए. ठीक है, ड्यू टू अ न्यू ट्रांजेक्शन इन द मार्केट, कोई एस्टिमेशन चेंज हुआ होगा. राइट, दिस चेंज शुड बी अकाउंटेड फॉर एज. क्या क्वेश्चन है, अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अंडर इंड AS 8, अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर इंड AS 8, a reclassification adjustment within equity, a correction of an error if the prior valuation was incorrect. So obviously this is change in accounting estimate and it will go in that way only. A, that is a change in valuation inputs due to new observable market data is a change in accounting estimate. The change is applied prospectively and the new value is recognized in the current period. For example 2024 में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 2022 में स्टार्ट हुआ है, 24-25 के एंड में हम देखते हैं वो ऑब्जर्वेबल हो गया है. ठीक है, तो प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2025 इटसेल्फ, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. जब से हुआ तब से नहीं देना है, जब हुआ है एट करंट पोजीशन तभी उसका हमें प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेयर वैल्यू हियरार्की इज इनकरेक्ट. कोई भी क्वेश्चन में अगर इनकरेक्ट आता है तो ऑलवेज बी केयरफुल कि डोंट रीड इट इन मिस्टेकनली. इनकरेक्ट मतलब कौन से गलत है, मतलब उसमें करेक्ट 3 रहेगा, एक ही इनकरेक्ट होगा. राइट, लेट्स सी. लेवल 1 इनपुट्स हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी, लेवल 3 इनपुट्स द लोएस्ट. If a level 1 input is available, it must be used and cannot be ignored. If the volume of activity in the market has significantly decreased, the market is still considered active. Adjustments to level 1 input for blockage factor are permitted if the entity holds a large position. So we see level 1 inputs have the highest priority. Yes, this is correct. Level 3 inputs the lowest. 8. ठीक है, if the level 1 input is available, अगर a level 1 input is available, it must be used and cannot be ignored. तो हम कहीं और देखेंगे नहीं, level 1 में चल गया. ठीक है, this is also correct. Number C, if the volume of activity in the market has significantly decreased, volume activity कम क्या है, the market is still considered active. Active market तो है ना, तो this is also right. Adjustments to level 1 input for blockage factors are permitted if the entity holds a large position. तो incorrect only D है. Explicitly in AS 113 prohibits adjusting level 1 inputs for factors such as blockage, large holdings. The quoted price in an active market is used without adjustment. कोई भी adjustments नहीं करना है. ठीक है, large entity holds a large position. So क्या बोल रहे हैं, prohibits the adjusting level 1 inputs. लेवल 1 इनपुट्स कोई भी ब्लॉकेज के लिए हेल्प नहीं किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27. व्हेन मेजरिंग द फेयर वैल्यू ऑफ एन इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये इंटरेस्ट रेट स्वैप है. एंटिटी ए यूजेस अ लिबर कर्व, ऑब्जर्वेबल लिवर कर्व है तो ये ऑब्जर्व किया जा रहा है. ठीक है, बट ऑल्सो अप्लाइज इट्स ओन नॉन परफॉर्मेंस रिस्क एडजस्टमेंट अनऑब्जर्वेबल. तो नॉन परफॉर्मेंस रिस्क एडजस्टमेंट भी कर रहा है. द फेयर वैल्यू मेजरमेंट शुड बी क्लासिफाइड एज लेवल 1 बिकॉज द लिबर कर्व इज ऑब्जर्वेबल, लेवल 2 बिकॉज द सिग्निफिकेंट इनपुट्स आर ऑब्जर्वेबल,
Level 3 because a significant input own credit risk is unobservable. Okay, level 2 but disclosed separately as having a level 3 adjustment. तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं जहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट स्वैप है, लीवर कर्व उसका है, ऑब्जर्वेबल है, वी कैन ऑब्जर्व, तो लेवल 2 में आ जा रहा है, बट इसका एक नॉन परफॉर्मेंस रिस्क एडजस्टमेंट है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे? लेवल 1 में तो नहीं है इसका, लेवल 2 और 3 के बीच में हम देखते हैं. इट शुड बी गोइंग बाय लेवल 3 बिकॉज अ सिग्निफिकेंट इनपुट ऑन क्रेडिट रिस्क इज अनऑब्जर्वेबल. इफ एनी सिग्निफिकेंट इनपुट to the fair value measurement is unobservable, like an entity specific non-performance risk adjustment not corroborated by the market data, the entire measurement is classified as level 3. तो ये 2 से 3 में ज़्यादा इसका ये लग रहा है बिकॉज देर इज अ इनसिग्निफिकेंट इनपुट है जो अनऑब्जर्वेबल है. ठीक है, जैसे कि नॉन परफॉर्मेंस रिस्क एडजस्टमेंट है. Question number 28. According to Ind AS 113, the fair value of a liability includes only the amount that the entity would have to pay to the counterparty, the amount that the entity would have to pay to the counterparty plus transaction costs, the amount that the market participants would require to assume the liability, including the risk of non-performance by the entity, and D, the present value of the future outflows discounted using the entity's incremental borrowing rate. तो Ind AS 113 के fair value liability हम कैसे निकालते हैं? liability का answer is C, that is the amount that a market participant would require to assume that liability, okay, including a risk of non-performance by the entity. That has also to be included here. Question number 29. Entity B uses a discounted cash flow DCF model to value an unquoted equity investment. Unquoted, it is not quoted, so it goes as in level 2. Equity investment. Okay, the DCF uses cash flows projections for the next 10 years and a terminal value is also there. The growth rate used in the terminal value calculation is 5%, okay, which is higher than the long term inflation rate of the country. Country के inflation rate से ज़्यादा है. This input terminal growth rate would most likely be a level 1 input, a level 2 input, a level 3 input, नॉट एन इनपुट एज इट इज एन एजम्पशन. सो क्या बोल रहे हैं? एंटिटी बी के पास एक डिस्काउंटेड DCF मॉडल है जिसका अनकोटेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट है. ओके, अब उसमें पोजीशन 10 साल का टर्मिनल वैल्यू है, ग्रोथ रेट 5% का है, तो ये किस में जाएगा? तो दिस विल 100% कम अंडर C, दैट इज लेवल 3, बिकॉज द टर्मिनल ग्रोथ रेट इज टिपिकली अ सिग्निफिकेंट अनऑब्जर्वेबल यूनिट. द टर्मिनल ग्रोथ जो है is a significant unobservable input as it is a long term assumption not directly observable in the market. long term assumption 10 साल तक. ठीक है, when someone is saying about 10 years तक इसका DCF निकाल, तो we don't unobservable units, significant unobservable unit is coming. okay, so we will just go for level 3. Question number 30. Which of the following is not a required disclosure for level 3 fair value measurement? जो नहीं है, अगेन जैसे इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ऑलवेज सी देयर इज नॉट रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर नहीं है. रिकंसिलेशन ओपनिंग टू क्लोजिंग बैलेंसेस, द वैल्यूएशन टेक्निक्स यूज्ड, द सेंसिटिविटी ऑफ फेयर वैल्यू टू चेंजेस इन अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स एंड द नेम एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द एक्सटर्नल वैल्यूअर. ओके, reconciliation of opening to closing balances is a must. okay, valuation techniques used is a must. okay, sensitivity analysis is also a must for level 3 measurement. So D, the name and the qualifications of the external valuer is relevant here. okay, while disclosing that an external valuer was used is required, the name and the qualifications of the valuer are not mandatory disclosure in Ind AS 13. okay, so till now I think the Ind AS 113 can be solved by you. Thank you. If you like the videos, please like and subscribe. Thanks for watching.